children are helping in the brick field when they grow up, whether it's a girl or a boy. If we want the child to grow into a healthy human being, he should be mentally, physically, socially, emotionally fit. Now we are trying to bring in awareness for education. We met the parents, we spoke to them, we talked to them, and they were quite excited. We asked them, how do you feel if you have a school, if your child goes to a school? Because these children were the first generation learners. We have employed a teacher from our teacher's training. So she is aware of what the child's need is, what the child needs, how the child develops. पहले स्टार्ट हम लोग एक्टिविटीज़ से करते हैं, कंक्रीट मटेरियल एंड रिलेटेड, जो बच्चों से रिलेट हो, जो बच्चे जानते हों, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं. First, I will prepare the language, more work on language, because they belong to Bihar. Children will not understand and speak in proper Hindi. So first priority to speak in Hindi. Then I will start to work reading and writing. In India, there is a 27 state. The labor come from Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh. So they are migrant labor. The main problem with and me and we, they are, is a language problem. तौलिया, डाल, आओ, यहाँ लिखो, आओ, लिखो यहाँ, आओ, आ पर ओ की मात्रा सूरज और से ऊपर करके लिखिए. पर ओ आ रहेगा, वा नहीं, ओवरऑल मतलब जो पुराने होते हैं उनके पास, उनसे हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती. जो नए लेबर हैं उनसे लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है. इसलिए स्कूल शुरू किया गया जैसे बच्चों को यहाँ की लैंग्वेज वो फॉलो कर सकें. The classroom is multi-grade, multi-level teaching. We have taken up that process in which there are 3 groups, group 1, group 2 and group 3 according to the ability and need. So the teacher moves on to each group and then she works on each child. There are targets set for each child. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में उनके मोटर्स डेवलपमेंट, कलर, लैंग्वेज, उठना बैठना, क्लास में एडजस्ट होना, उनको डेली की चीज़ें सिखाना. और जो उससे बड़े ग्रुप वाले हैं उनको धीरे धीरे लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी, गणित, डेली डेट टाइम एंड एक्सेट्रा स्टार्ट हो जाता है उनको पढ़ाना. और जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लेवल का पढ़ाते हैं और वो जल्दी फिर पकड़ लेते हैं. सारे में एक कहानी है ना, 10 एक कहानी. अब 3 लाइन की जो 1 लाइन काटो. हाँ, अब जरा 4 लिख के खुद से दिखाइए.
दूर लिखो ना, तब ये पता चलेगा 4 है। चलिए 8 लिख के दिखाइए। 8 8 थोड़ा दूर लिखिएगा ना, तब 8 9 ना पर औ की मात्रा 9 8 के बाद 9 ना पर औ की मात्रा 9 9 औ की मात्रा। एक लाइन और खींचो, ऊपर है मात्रा 2। देखो आज The curriculum is different because it's according to the need of the child, what the child needs. We develop a curriculum according to them. But the pedagogy is the same, the methodology, the pedagogy. It has a good infrastructure, it has a jolly playground. We built a playground for them, the tire swings. And then we saw that looking at their hygiene and other things, we even made a toilet for them. So they've started using a toilet also, and they've learned. It is relevant because we believe in relevant education, and it should be meaningful. Because a child living in that area, Banbirpur, so whatever he can see, if the curriculum is based on that. When children come, they not how to sit and how to eat anything and how to go to toilet. But after some time, more changes in children. They will proper sit and proper eating, language development, many more changes I observe.
एक्चुअली पेरेंट्स पहले ये बोलते थे कि दिन भर बच्चे मिट्टी में ही खेलते रहते थे। अब जो वो कुछ नहीं करते थे तो स्कूल जाते हैं, कुछ तो सीखते हैं। एंड हम लोग भी स्कूल में सिखाते हैं कि उनको किस तरह से अपने पेरेंट्स का हेल्प करना चाहिए, किस तरह अपने टाइम को यूज़ करना चाहिए। They are engaged at home. They help their parents. Now they are teaching their parents. Last week, a parent had gone for a wedding and the child was alone at home. So he had to cook. What he did, he himself made the food for him and his friends came and helped him because they were cooking in the school. The midday meal which we are giving them is prepared by the children itself. So that is a life skill. So that life skill helped him at home. So that we can see how the child is developing. The parents are excited. हमारे तरफ से तो ठीक लग रहा है कि अब छिछिक हो रहा है बच्चे और हमको भी खुशी मिल रहा है। ऐसे बच्चे सब जगह नहीं होता है भट्टे पे, यहाँ पे उपलब्धि किया है तो अच्छा बात है। ये नाम लिख देता है हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भी जानते हैं कुछ पढ़ना लिखना। स्कूल के बारे में तो सब चीज़ जो हो रहा है जो बढ़िया हो रहा है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खुशी की बात है। वह ऐसा लगता है हम लोगों को सर कि पूरा इनको धीरे धीरे ये यहाँ अच्छे से सेट हो सकते हैं। ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं वो कर रहे हैं, फिर आगे तक पढ़ें, अपने पेरेंट्स की तरह वो काम ना करें, एक अच्छे इंसान बने और वो पढ़ें। We have parent-teacher meets and then on the report days the parents come. They are very happy to listen to the child development. They are so excited, they are enthusiastic, they are becoming sensitive human beings and we can see empathy in them, which we want to, because our ultimate goal is that they should be sensitive, empathetic and make the world a better place to live in. They are also excited to learn. So we have thought of why not start some classes for the mothers also. Next year it's in the pipeline and you won't believe that this time we had 50 same children coming back
and joining the brick field, the laborers who go, because they always go and join different brick fields. But this time 50% of them came back because of the school. And we started it with 2 children. There were only 2 children for a week. But then looking at this thing, excitement, the development, other laborers started sending their children, and then we came up to 40. बाकी स्कूल से और यहाँ की इन्वायरमेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ हमेशा, ऐसे बच्चों के साथ, इनके लिए, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज दिस चिल्ड्रेन। मैं हमेशा इनके लिए कुछ नया और कुछ अच्छा ही करना चाहूँगी। बहुत चेंजेस हुए। पहले तो बिल्कुल भी हमें नहीं लगता था कि ऐसे लोगों के साथ हम रह सकते हैं, या ऐसे लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं था जो एजुकेशन से दूर हैं, जिनको रहना ठीक से नहीं आता है। बट अब लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया, कुछ करना चाहिए इस तरह से। अगर मेरे थोड़े से काम से किसी की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। If the same children are going to come back every year, so we are planning to send them to mainstream schools. जो बच्चे अब जो पेरेंट्स अपने या परिवार जो पथेरे थे वो घर गए, वो दोबारा लौट के आए कि हमको बच्चे को पढ़ने को मिलेगा, स्कूल मिलेगा, इसलिए वो ये फ़ायदा है। लेबर कंटिन्यू रहती है और फ्यूचर में हमारे पास लेबर कंटिन्यू रहेगी। हम लोग इसीलिए तो भेजना चाहते हैं कि इस भट्टे पे आए, हम भी आएँ और बच्चे पढ़े लिख कर आगे बढ़े। It's totally free. We don't charge anything, nothing. We want the children to come, and of course the parents are excited because I told you, they are the first generation learners. So we don't charge anything from. आप लोग की दुआ से आप यही कहना चाहते हैं आपके। हमने सोचा है कि इनको पढ़ाते रहे। यहाँ से जाते हैं तो हम स्कूल में प्राइवेट में लिखा देते हैं ना, वहाँ भी पढ़ता है। इसमें बड़ी बात है कि वो लिख पढ़ लेंगे तो उनका नाम होगा, हमको नहीं। कहेगा कि उन भट्टे पे गए थे तो वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, इसलिए हम लोग अच्छे रहते हैं। We can think, if like children, we get older children too, we can start vocational training for them. We want the children to be sensitive, responsible, innovative, and better human beings to make the world a better place where they can live in. मंजन कर लो, कंघी कर लो, कपड़े बदल लो,
ठीक समय पर खाना खा लो, नाखून कभी ना बढ़ने दो, मैल ना उसमें जाने दो, सफाई की आदत अपना लो, कूड़ा कूड़ा दान में डालो, मत फैलाओ इधर उधर, अच्छी आदत को अपना लो, सुंदर अपना शहर बना।